Good evening. How are you doing? Good evening, good evening, good evening. I'm so happy to see all of you. Good evening. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu BioTonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to today's session. कैसे हैं मेरे बच्चे? How are you doing? I'm very good. I'm very happy today because of something very beautiful. Because I'm kind of coming close to my dream, and my dream is to do something for the girls of our country. If you have seen Vani the Voice, you would know I'm trying to do something. I don't know whether you will agree with me or not, but I personally feel that women are half the world's population. They are 50% of the world's population. But even then, there are so many ladies and so many women who don't, who don't realize their full potential. Do you see your mothers? Do you see your sisters? Do you see your aunts and your friends holding back? Do you see that they don't इजाज़ वो अपना पूरा पोटेंशियल शायद लाइफ में रियलाइज नहीं कर पाती? They want that push. They want somebody to tell them that it is possible, to dream and to be able to achieve those dreams. That padhana is very close to my heart, but to give back to the society is even more close to my heart. To be able to do something for this world is something which is even more close to my heart. So I'm going to be doing something, maybe volunteer my time, my energies, in a small way if possible, and try and do something. So आजकल मुझे रातों को नींद नहीं आती है. It is like college love. It is like the first time I fell in love. I'm dreaming, and I'm on cloud 9, and it's actually like first love, right? So I'm happy, and I'm writing, and I'm very excited, and I want to do more for the world. I want to do more for girls. I want to do more for women. Yes, अच्छे लक्षण है. So that keeps me awake. I'm sleeping and I'm doing something else. Suddenly I'm like, okay, let's do this. It's like that. So yeah, ma'am is blushing. Yes, I'm. It's like a baby. All your energies are there, and I really want to do this. But chalo, पढ़ाई करते हैं. Let's finish this chapter off, and after this I will move to biotechnology and ecosystem. So I will try and finish your syllabus in the next 20 days. मेरा बुक ऑर्डर कर दिया. It's really going to help you a lot. And guys, मैंने ना एक नई चीज शुरू की है. वी फॉर वानी मैम, एक यूफ करके डिजिटल मैगजीन आती है. So they contacted me, and then there are a lot of questions that people ask me and I answer. I will give you the link on Instagram and maybe on our comment section also. If there's something that you want to ask me, you can tell me. Like, I'm a woman of 26 in my workplace. I feel the dominance of patriarchy, the so-called light-hearted humor about women irritates me. I try to protest and give them another cause to laugh out loud. I don't want to quit my job. How to bear with this scenario? I'm a government job aspirant, but these exams are taking so long. Now I feel demotivated. So yeah, so I'm kind of answering questions. Right, but तुम लोगों के लिए तो मैं यहीं पे हूँ भाई, हमेशा 24/7. You are like my चुन्नू मुन्नू gangsters. Thanks Hamar. Right, चले फिर, can we start? Thanks Sai. शुरू करते हैं. अगले 15 दिन में मैं आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगी, and after that I will start your 11th revision. अरे वाह प्रिंसी, I will start your 11th revision and I will do a lot of MCQs with you. ठीक है त्याशा, कल परसों में एक टेस्ट ले लेते हैं, then we can have this week's t-shirt also. In fact आज काफी बच्चों की t-shirts मैं आज कल में भी निकालने वाली हूँ. ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's quickly get started everybody.
And make sure that you are liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing, becoming a part of Vedantu BioTonic. And remember, go get the book, guys. It's a really, really important, life-changing book. It will help you a lot in trying to, solve all NCERT-based questions, different varieties of questions. So please go get the book, and don't forget to like, share and subscribe. Hit the like button, hit the share button, hit the subscribe button. चलो आते हैं। तो कल मैंने आपको बायोगैस तक पढ़ाया था। रिमेंबर द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ यस्टरडेज क्लास। कल मैंने बायोगैस तक पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ा था याद कीजिए? प्राइमरी सेकेंडरी फिल्ट्रेशन पढ़ी थी, याद आया? एजाज, दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, करेक्ट एवरीबडी? चलिए, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? चले? I'm looking at your comments. ठीक है, डन। आ जाओ, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। कल मैंने बायोगैस पढ़ाया था आपको। कल की स्लाइड्स आप देखिए। मीथेन पढ़ाया था, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था। आई टोल्ड यू कि प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्ट्रेशन होती है, और फाइनली जो स्पेंट स्लरी होती है उसको भी आजकल नदी नालों में नहीं छोड़ते। वी डोंट हैव टू रियली पुट इट इन नदी नालास। व्हाट डू वी डू विद इट? वी पुट इट इन अ बायोगैस प्लांट। सो दिस बायोगैस प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बायोगैस, एंड फाइनली जो स्पेंट स्लरी निकलेगी बायोगैस प्लांट से, दैट इज द वन, अर्चिता, व्हिच वी आर गोइंग टू पुट इन फील्ड। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट ऑल gases is a very important question. It's a mixture of predominantly methane. Right? Let's move it to this side. चलिए इस साइड आगे, अच्छी बात है। Okay. So it's a mixture of methane. What happened? It's a mixture of methane, predominantly methane. Along with it, there is hydrogen sulfide, and along with it, there is carbon dioxide. Are you aware of this? Right? Biogas is produced by microbes such as methanogens. What are the microbes which are called methanogens? कल हमने क्वेश्चन भी किया था that these are found in the gut of cattle, ruminococcus, याद आया? Right? So biogas is produced by microbes such as methanogens, which produce methane. Methanogens grow anaerobically without the presence of oxygen on cellulosic material. तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो सेलुलोसिक मटेरियल है। रूमिनोकोकस में ना पंचमी RUMENOCO होता है। तो इट इज रूमिन विच इज द गट ऑफ द कैटल। मीथेन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। MCQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ओके, गट ऑफ रूमिन्स, एब्सोल्युटली बायोगैस प्लांट्स हैं बड़े बड़े, यू आर एबल टू सी देम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। वेल डन साई लक्ष्मी। मिथानोजेंस जो बैक्टीरिया है वो एग्जाम में आ सकते हैं। मिथानोबैक्टीरिया रूमेन ऑफ कैटल में होता है। मिथानोबैक्टीरिया मिथानोकोकस सेलुलोसिक डाइजेशन में होता है। इसीलिए अगर किसी भी चीज को आपको डाइजेस्ट करना है, यू विल रिक्वायर कैटल डंग, जिसको हम गोबर भी कहते हैं। राइट? अगर आपने कभी भी कंपोस्ट बनाना है, कंपोस्ट बनाने के लिए नो प्रॉब्लम पंचमी, नो प्रॉब्लम अमार, कंपोस्टिंग के लिए यू विल रिक्वायर गोबर। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है दैट व्हाई डू हैव टू ऐड गोबर। आप गोबर इसीलिए ऐड करते हो सो दैट देयर इज क्विक डीजेनरेशन, बिकॉज देयर इज बैक्टीरिया विश्वकर्मा इन गोबर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? Ruminococcus. Use of biogas is for cooking and lighting, which is basically done in rural areas. राइट? अब क्या क्या डल सकता है एनारोबिक डाइजेस्टर? अगर ये बायोगैस का, और आपको दिख रहा है ये डोम है, डोम, दिस डोम इज नॉट फिक्स। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होती है, अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है, ये डोम उठ जाता है, यहां से स्लरी एंटर करती है डाइजेस्टर के अंदर, और स्पेंट स्लरी जो है वो यहां से निकलकर फील्ड्स में हम ऐड कर देते हैं। देन देयर इज द डोम। एज सून एज गैस इज प्रोड्यूस्ड, द डोम राइजेस, सो वी रियलाइज, एंड डोम के ऊपर गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए वन नोजल इज देयर, तो उसको खोल देते हैं, गैस निकल जाती है। राइट? तो एनारोबिक डाइजेस्टर में हम क्या क्या डाल सकते हैं? लाइफ स्टॉक वेस्ट, दैट मींस गोबर, सम क्रॉप्स, मोलासेस, सेलुलोसिक मटेरियल जिसको डाइजेस्ट करके मीथेन बनेगा, अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, फूड वेस्ट भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव मेड अ स्मॉल कंपोस्ट पिक एट द बैक ऑफ माय होम, ट्राइंग टू क्रिएट सम होम कंपोस्ट। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो इसमें से बन जाएगी बायोगैस, एंड जो भी मटेरियल बच जाएगा, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं है इसमें, देखिए,
राइट, नॉर्मल बायोगैस में वी कैन ऑब्वियसली ह्यूमन एक्सक्रीटा सीवेज से भी बन सकते हैं, बट ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं है। तो जो भी मटेरियल रिमेन करेगा, जो भी मटेरियल बच जाएगा, डाइजेस्टेट जो है वी कैन मेक फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट्स, लाइफ स्टॉक बेडिंग एटसेट्रा। राइट एवरीबॉडी, बायोगैस से बायोमीथेन भी बन सकता है, व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन ईयर्स टू कम। Right, let me explain the structure of, don't they smell a lot? I made it in one corner of my home, Amar, and there is no human excreta. There is just kitchen waste. I'm trying to make compost out of kitchen waste. There is no smell, and I'm trying to make bioenzymes. I was thinking one of these days I'll make a video on how to make bioenzymes at home. So I made bioenzymes from citrus peel and jaggery. Right, obviously shambhavi, and I'm trying to compost kitchen waste. I've done that at home. I will make a small video tomorrow and tell you. By the time, you can always Google bioenzymes. No, I'm not cooking. I'm just collecting the waste and putting in a pit. Yes, consisting of biogas plant. Now, this is a biogas plant. मैंने आपको पहले भी बोला, there are 2-3 things which you have to pay attention to here. One of them is the inlet pipe. One of them is the outlet pipe. And outlet pipe का जो finally सामान है वो fields में जा सकता है. It can go into the fields. Right everybody. ये gas storage है, इसके ऊपर डोम होता है, डोम के ऊपर ही वाल्व लगा होता है जहां से गैस जो है वो बाहर जाएगी. This is the digester tank. इसके आसपास ब्रिक लगी होती है and then it comes, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है and then it is out. out से वो fields में चला जाता है. It is a concrete tank, 10 feet deep, 15 feet deep. Concrete मतलब इसके आसपास bricks लगी है जहां पर slurry क्यों होता है? क्योंकि वो liquid है. That gobar is in liquid form, right पंचमी? Citrus lemon vinegar नहीं डाला मैंने. In fact, I just added some jaggery. Right, a floating cover is placed over slurry. तो ये जो डोम है ये फ्लोटिंग कवर है और जैसे जैसे गैस बनेगी वो राइज करता चला जाएगा. There is an outlet जहां से बायोगैस सप्लाई होगी और जो एक्स्ट्रा है स्पेंट स्लरी इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. स्पेंट स्लरी वो स्लरी है, दिस इज स्पेंट जिसकी गैस बन चुकी है. आउटलेट पाइप वाली इज द स्पेंट स्लरी. इसको हम जाकर फर्टिलाइजर के फॉर्म में फील्ड्स में यूज कर सकते हैं. सो यू हैव द इनलेट पाइप, यू हैव द कंक्रीट digester covered by a floating dome and an outlet pipe from which the spent slurry is added onto your fields. Now let us come to biocontrol agents. There is something which is called as Bacillus Theory. In fact, आप अगर अभी मेरे सामने एक और टैब खोल के गूगल करेंगे तो आपको बीटी के डंग्स मिल जाएंगे. एक्चुअली मेरे पास घर में 5 या 6 पॉन्ड बना दिए मैंने. एज यूजुअल मैंने आपको पहले भी अपने पॉन्ड वाली स्टोरी बताई है, बट जैसे बच्चे वैसे ही टीचर. तो मैं क्या कहूँ आपको, आदमी गलती करके सीखता नहीं है. मैंने पिछली बार पॉन्ड बनाया था, उसमें दुनिया भर के मच्छर पैदा हो गए थे और दुनिया भर के फ्रॉग्स ने आकर डांस पार्टी करके अंडे दिए थे. बट मैं अपने पुराने गलतियों से नहीं सीखी हूँ और मैंने यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 पॉन्ड बना दिए हैं. तो ऑलरेडी अभी तक तो सीजन फिर भी ठंडा है, तब भी मच्छरों ने त्राही त्राही मचा दी है. राइट, सो मैं गूगल अमेजोन पे कर रही थी कि यार मुझे लार्वा किलिंग केमिकल मिल जाए, पर मैं अपने पॉन्ड में थोड़ी फिशेस भी डाल रही हूँ. मैं एक्चुअली गप्पी फिशेस लेकर आई हूँ. तो गप्पी फिशेस जो है वो मेरा मन कर रहा है उनको डालने का. वो मॉस्किटो के लार्वा ईट कर लेती हैं, तो देखती हूँ क्या कर सकते हैं. गैम्बूजिया एग्जैक्टली राइट. तो यस, मन तो मेरा वही है कि मैं गैम्बूजिया डाल दूँ, बट मिलनी चाहिए. राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं जब अमेजोन पे जा रही थी तो बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल थे जिनमें बीटी लिखा हुआ था. राइट, बीटी. तो राइट, ट्राइगॉन ले आऊँ मैं. हाँ, साथ में मुझे खा जाएगी वो ट्राइगॉन. तो बीटी बहुत पे लिखा होता है. इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस. अब होता क्या है कि जो कैटरपिलर्स होते हैं ये लीव्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. आई रिपीट एवरीबडी, द कैटरपिलर्स आर देयर. यस, थैंक्स ललित, इट्स एन अमेजिंग बुक, थैंक यू. ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये लीव को
इनगल्फ कर लेते हैं, लीफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैटरपिलर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, एंड पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस होता है, इसका स्पोर, वी टेक अ स्पोर ऑफ दिस, और वो हम लीफ पे डाल देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबडी? राइट। इसके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन होती है जो हम ऑब्वियसली लीफ पर डाल देते हैं। अब जब कैटरपिलर आता है और वो बीटी जीन को खाता है, तो ये जो बीटी जीन है ये इनएक्टिव होती है, इट इज अ इनएक्टिव जीन, बट इन द gut of the larva it mixes with the saliva of the larva, and from an inactive gene it becomes a active gene, and therefore ये जो बैक्टीरिया के गट की जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। The cells explode and the caterpillar, you can see, dies. Right? So this, my dear children, is a caterpillar. You can easily see this. This is the protein, the BT, which has entered the gut of the caterpillar. From inactive, it becomes active, and after it becomes active, it releases the toxin, and because of which the cell will explode. It will tear open the cell. So Bacillus thuringiensis is there to control lepidopterans or butterfly caterpillar. Caterpillar is always going to eat the leaf. So this BT is available in sachets as dried spores. आप इसको स्प्रे कर दो प्लांट्स के ऊपर, ब्रासिका, सरसों के पौधे के ऊपर, फ्रूट ट्रीज के ऊपर, जहां पर इंसेक्ट लार्वा होता है। इट इज गोइंग टू रिलीज अ टॉक्सिन। टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव होता है। When this toxin meets the saliva in the gut of the larva, तब जाकर वो एक्टिव होता है। Right? Alkaline gut pH. So alkaline gut pH of the saliva is going to activate it, and when ये activate होता है, it explodes the cell, it makes holes in the cell, and the caterpillar dies. BT cotton, BT brinjal are types. So larvae stop feeding in minutes and die in 1 to 3 days. Next is their biocontrol agent, Trichoderma. Basically, there are some plants which are referred to as cash crops, which are very important. For example, tobacco is a very, very important cash crop, right? So you have a special fungus. These are seen in the root ecosystems, right everybody? These are special fungus. Now you know how the fungus is. Fungus is really spread all over. So what do? They control several plant pathogens, right? Baculoviruses, especially the genus Nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus. They attack insects and other arthropods. Suitable for species specific narrow spectrum insecticidal applications. तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। आपने क्या लिया, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस लिया, और बेसिकली ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है, राइट? तो कई बार ये फंगस जो है वो रूट्स में ग्रो करती है, और रूट्स में अगर कोई भी आर्थ्रोपोड, कोई भी अटैक होता है आर्थ्रोपोड का, राइट, तो ये जाकर आर्थ्रोपोड फंगस में अटक जाएगा जो प्लांट की रूट पे है। तो अगर ये प्लांट है, इसकी रूट पे फंगस लगी है, पॉइंट नंबर 1, the root of the plant will have fungus, point number 1, वहां जाकर the arthropod will get stuck. This is called as integrated pest management. आपने इंटीग्रेट किया, आपने न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को प्लांट पे उगा दिया, राइट एवरीबडी, जो न्यूक्लियो अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स जो अफेक्ट करते हैं, these are the ones which are going to be got caught in the fungus Trichoderma polysporum. Is that clear? IPM is integrated pest management.
Right? आज खत्म हो जाएगा ये portion बेटा. So fungus are seen in root ecosystems. These control plant pathogens. These funguses attack insects and also other arthropods. अब आते हैं biocontrol mycorrhiza. Myco is fungus. Mycology is the study of fungus. Rhizome, rhiza means root. So mycorrhiza. Mycology is fungus, rhiza is root. मतलब root पे fungus लगी है, right? Root has got fungus. That's called mycorrhiza. Now what happens is that the fungus always spreads. It spreads like this. It just spreads. And once the fungus spreads, it absorbs water, it absorbs minerals, it absorbs nutrition. It's going to absorb everything. Once it absorbs water, mineral, nutrition, everything, it will give it to the plant. The plant will do photosynthesis. Suppose this is fungus. So fungus is spreading, absorb water, minerals, nutrition. Suppose I am the plant. It's going to absorb everything and give it to me. I am the plant. I'm going to take all of the water, mineral, nutrition, whatever it is. And once I get the water, mineral, nutrition, I'm going to do photosynthesis because I've got water, I've got minerals. When I do photosynthesis, there is some energy which I'm going to produce. I'm going to produce C6H12O6. I'm going to give it back to the fungus. The cycus also has colloid roots, right? The fungus will spread. Again, the fungus will absorb water and minerals and give it to me. Again, I will do photosynthesis. Again, I'm going to give it to the fungus. The fungus is further going to spread. So, symbiotic association, sym means together, bio means life, between fungus. Example, glomus with plants. The fungus gets food from the plant. The fungal symbiont absorbs phosphorus, most important, glomus, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, most important. So glomus, which is in the roots of higher plants, especially pinus, right, will pass it to the plant. Plant को water, mineral, nutrition मिलेगा. Plant और grow करेगा, photosynthesis करेगा, fungus को देगा, fungus grow करेगी. Also, इस fungus के जो वो growing parts हैं, जिनको हम hyphae, mycelium कहते हैं, they are going to produce resistance to pathogens. Because the fungus will spread underground in hyphae and mycelium. Even if there is less water, there is a drought kind of a condition, there is salinity, fungus will still absorb water and minerals and give it to the plant. So it's a win-win situation. It helps in growth of plant and development. Because fungus grows underground, fungus forms a network, fungus absorbs water and minerals, and the plant will use those water and minerals to do photosynthesis, to make food and give it back to the fungus. Now let us also come to cyanobacteria, which is blue-green algae. This is a paddy field, as you can see. There is standing water here, right? In the standing water, you have cyanobacteria. This cyanobacteria, which is called blue-green algae, also produces oxygen. So remember, it is one of the first organisms to come on earth which produce oxygen. These are autotrophic. They produce their own food because they are green in color. They can do photosynthesis. I remember, I've told you, auto का मतलब होता है self. So because they're green in color, blue-green algae photosynthesis कर सकते हैं, microbes हैं. But सबसे important बात है Anabina, which is a blue-green algae, right? जो paddy field में रहती है, Anabina, nostoc, oscillatoria, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं NPK और ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. These are biofertilizers. आपको यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, आपको NPK डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद डालेंगे. It adds organic matter, it increases soil fertility. अरे ये तो कमाल हो गया. This is such a easy peasy lemon squeezy. Azole, Anabinazola, सुना आपने? Right? So this is about the end of the class. Tomorrow, can we take a test for this chapter also? Hi Charu, hi Archita. Tomorrow, can we take a small test for this chapter also? And then start biotech super soon? Yes? Perfect. Perfect. So see you guys. Tomorrow there's a mega test of plant physiology tomorrow at 7 p.m. No, 5 p.m. Okay? Take care. Bye. God bless you. Ready for test? And उसके बाद I'm going to start biotechnology. Bye guys. Bye.